Assalamu alaikum, everyone. I'm Ibrahim Shafi, and with me, I have my brother Qasim Shafi. And today, we're going to talk about how can we move ahead of AKU test, which concluded last Sunday. And now we're going to move on to the real preparation phase, MDCAT or NUMS. NUMS in September, MDCAT in October. So in this whole webinar, I'm just going to tell you about how are we going to take everything बुक्स कहाँ से पढ़नी है कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं आपने टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी हैं एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करने हैं ऑल दैट स्टफ so this is going to be a comprehensive webinar that's going to really enrich you to once again refresh your studying after the AQU test. I hope so कि आपका वो वाला टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा. So now let's formally start with my introduction. I am Ibrahim Shafi and I was the last year MDCAT topper. I'm from Federal Board, so I gave Sadabmu MDCAT and I got 192 out of 200 in that first one, जो कि first position बनती है. And then in NUMS MDCAT also, I top scored throughout Pakistan. I got 98.1%. And in the Sadabmu MDCAT too, if any of you know, there was a whole mess, a court and all that stuff. Case हुआ था और फिर उन्होंने ये conclude किया था कि MDCAT would be repeated, reconducted. So that happened, I think, so on December, and I got third position, 196 out of 200 in that. So this was a brief overview about me. And now, right now, I'm currently, like you could guess, I'm a first year MBBS student, and I'm at Rawalpindi Medical University. And my brother, he also appeared in Sadabmu, he also appeared in NUMS, and he now is a NUMS cadet at Army Medical College. So this was an introduction about ourselves. Now let's move on to the core of this webinar. So we'll start with the first thing, MDCAT overview and admission. Although I know that this is something कि आप सबको पता है, MDCAT, admissions, public medical colleges, private medical colleges, but just for those who don't know or some of those who have inadequate details, let me just tell you the whole detailed procedure के होता किस तरह. So MDCAT, there are basically three types of MDCAT. AKU has gone, and that is for our fund. And we have been left with NUMS MDCAT and an MDCAT conducted by PMDC. So NUMS MDCAT is gonna most probably occur in September, and the PMDC MDCAT that's going to be in October. So NUMS MDCAT किन colleges के लिए होते हैं? These are for those colleges that are affiliated with Army. Like the main one, the best or the most famous one is Army Medical College that is located in Rawalpindi. And then there are some private colleges like CMH and some affiliated with them. So for if you are willing to get over there, you need to give NUMS entry test. And if you're willing to go in a public or private medical college other than that and other than Aga Khan, like for example, if we talk about Punjab, we have King Edward, we have Allama Iqbal, we have Rawalpindi Medical University. In Sindh, we have Dow, we have Jinnah, and all those others. So if you're willing for those, you have to give MDCAT conducted by PMDC. Now, both of these MDCATs, they're not related to each other. Like, इस तरह नहीं है कि आपको दोनों MDCAT देने हैं और इस तरह नहीं है कि if you're going to pass both of them, then you can get admission in any of the colleges. दोनों individual criteria है, दोनों colleges different types हैं, उनका different है. So this is the point. अब अगर हम MDCAT की बात करें, NUMS तो एक तरफ साइड पे हो गया. It's only for army related colleges. Now, if we are going to talk about MDCAT specifically, so there are two main broad categories that come. One is private medical college and one is public medical college. A public medical college, what are the pros and cons? The first thing is that this is something affiliated with the government, so you're gonna have sponsored education. Aapki fees, it's like really less. So like for a whole year, I'm paying like around 22,000 per year at Rawalpindi Medical, and it just varies with every province, but it's somewhat like similar. You could say 3 or 4,000 per month. That's the whole cost of doing MBBS in a public medical college. And the best thing about them is that they've got the experienced faculty and all those hospitals affiliated with them. So that's a whole good experience of doing MBBS. So if I talk about private medical colleges have got an edge over them in just one thing, and that's the merit. Because their merit sort of goes around 90 or even lesser if there's a less renowned private medical college. But if I talk about public medical college, it usually exceeds 90. That's sort of compulsory. If you're aiming for any public medical college in anywhere in Pakistan, you need to target above 90. It varies every year. Like if I talk about last year in Punjab, it was exceedingly high. It went like 94% above. So that was just last year. वैसे normally अगर मैं बात करूँ, so it goes like 92 or 91%. In KPK, it's a bit lesser. In Sindh and in Balochistan, all those. So public medical college, the merit is higher, but the level of education and the cost of education, that's also good.
Then there's some strict domicile rules in public medical college because it is affiliated with the government. So you need to obey all those government disciplines. कि आपका domicile इस जगह का होना है. For example, if you're from Sindh, you can compete on open merit in Sindh University. But if you want to come in Punjab, you have to compete at quota. There's a specific quota of like every province in other provinces. So this is the point that there is strict domicile rules. But if I talk about private medical college, so as such कोई ऐसा उनका strict domicile rule होता नहीं है. Like for example, you can give any MD and you can get into it. There can be variation, but as a whole, if I talk about private medical colleges, so they don't have these restrictions about that you should be belonging from Punjab or from KPD or from all those. So these are the two entry tests, and there's some detail about the university you can apply. Now let's move forward to the next thing, and that is one of the most important of the core of this webinar, and that is the subject-wise strategy. So, as a topper of last year and the experiences that I had, I'm just going to give a brief overview or highlights of what I learned in every subject and how you guys should take every subject so that you can boost and excel your performance and you can get to the dream medical college. Because at the end, every one of you over here is dreaming to get into a prestigious medical college. Some of you might even be aspiring, dreaming to become the next topper, and I'm really excited to see one of you be over there. But like a common thing, आप सबकी ये है कि आपने अपने medical college, dream medical college में जाना है. So for that, you need to focus on every subject just systematically जिस तरह होना चाहिए. So we'll start off with biology. Biology की surprisingly PMDC MDCAT. I'm not talking about NUMS. PMDC MDCAT में weightage it increased. It went like 81 MCQs out of 180. That makes sort of you could say somewhat less than 50%. Yeah. So this is it. So that is about the biology portion. So how इसको cover up किस तरह करना है? Biology के लिए जो main चीज हमने सीखी है या what you would learn from seniors, from toppers, हम ये कहते हैं कि you need to have strong grip on your textbook. MCQs करें आप biology की, there is no problem. But the main thing is कि आपकी book आपको याद होनी चाहिए. I'm not really gonna emphasize on cramming or rote learning और वो सब कुछ, लेकिन मैं आपको एक general overview या perception ये दे रहा हूँ कि आपकी किसी भी book की line से MCQ आ सकता है. Now there's no need to like go into that facts और जो side tables होते हैं और जो values होती हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन as a whole आपने biology को portion को इसी तरह prepare करना है कि आपकी book thoroughly read हो जाए. और फिर उसके साथ किस बोर्ड की बुक को लिंक करना है, that depends आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं. Mostly होता ये है कि even if you're from Sindh, KPK, Punjab, you have to link federal board along with it. This year it's going to be the PMDC National MCQ Bank, and there's a lot of rumor that you have to prepare from all boards and how should I go for that. और ये बहुत अहम जो मुझे आजकल DMs भी आते हैं about this confusion. So what I have asked from teachers and sort of the evidences that I've collected, the best approach is that you need to focus on your own board. I'm just talking about biology right now. On your own board, and then along with that on the federal board. If you get time, even after covering both of these books thoroughly, you can go for other boards. But like reading the whole chapter, there's no need to just superficially extract some details or some differences that are not mentioned in your own board. So this is of biology. You need to be smart. You need to highlight. You need to have notes. You need to try looking for MCQs also. But the main focus should be on books. Now let's move to the next thing: chemistry. Chemistry. It's very sort of, it's like similar to the last year also, so a bit lesser. So chemistry is sort of, you could say, the intermediate. Biology में हम ये कहते हैं कि MCQs आपने book reading बहुत करनी है, physics में हम कहते हैं MCQs बहुत करनी है. Chemistry थोड़ा दरमियान वाली चीज है. उसमें आपने क्या करना है? You need to do book reading as well as MCQs. यानी आपने अपना जो टाइम है उसको डिवाइड कर लेना है. बुक रीडिंग करनी है, कौन सी बुक्स रीड करनी है? Once again I'm telling you, for chemistry your own board and then along with that federal board. So bio and chemistry का इस चीज में बहुत रिलेशनशिप सिमिलर है कि आपकी जो स्टडिंग अप्रोच है that's sort of same. आपने अपनी बुक फर्स्ट प्रायोरिटी, like if you're from Sindh and you have to give Dow, then you have to go for Sindh board. अगर आप पंजाब से आप UHS लेना तो आपको पंजाब बोर्ड, फेडरल से सदैब लेना you have to go for federal board along with one more board. Yeah, if you're from federal board तो फिर मैं कौन सी रेफरेंस बुक यूज करूं? तो आपने पंजाब बोर्ड यूज करनी है. Okay. So केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? अपने बुक्स ये वाली मैंने आपको दे दी हैं. MCQ प्रैक्टिस की जहां तक बात है तो MCQ प्रैक्टिस करनी है आपने. स्पेशली कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं. फॉर एग्जांपल you're reading I'll talk about inorganic chemistry. Now there are periods, there are groups, there are periodic table and all that stuff, trends वगैरह. आपने उनको एक दफा याद भी कर लेना. Until and unless you don't do MCQs, you don't get to know the different types of MCQs that can be made or be refined from that topic. उस वक्त तक आपकी preparation inadequate है. So MCQs, it's always important. And for chemistry, specifically for organic chemistry, for inorganic chemistry, for second year chemistry mainly, मैं ये कहूँगा कि आपने MCQ पे focus करना है. First year chemistry, sort of you could say sort of from the book, and there's not so much complication, so you could go for the book reading as well for that. Now let's move to the third thing, and that is physics. Physics में चीज बिल्कुल बदल जाती है.
Like although we have been studying physics the same way in SSC, but in MDCAT the thing switches. Physics क्या होती है? You have to study book, of course, but you don't have to study in as much detail as you have to study for biology and chemistry. Physics में क्या चीज important होती है? You need to go for MCQs. You need to go for numericals. You need to go for practice. You need to know the formulas by heart, and you need to know how to apply them at the moment. So physics के लिए I always like suggest students कि आपने क्या चीज focus करनी है. You need to focus कि आपकी physics के MCQ practice बहुत ज़्यादा हो. For example, I am doing a chapter, you could say any vectors and dynamics. So अगर मैंने 20 minutes को लगाए chapter करने में, so I need to at least spend 40 minutes doing MCQs from different types, from different sources, ताकि आपको वो chapter बहुत अच्छी तरह याद हो जाए. That's the first thing for physics. And the second thing that I suggest is that physics में जो MCQ discussions होती हैं, या for example you're buying any bundle, you say a bundle of pre-med or any other, so उसमें जो आपकी MCQ के बाद explanation है ना, वो आपने जरूर सुननी है या पढ़नी है. Because उससे होता है, there are some shortcuts, there are some tricks that you could use actually to improve your grip on those MCQs. So physics के लिए I would always suggest that you need to change your approach. Don't go on the conventional approach of remembering every word from the book. Physics में हम कहते हैं ना कि आपने जिस बोर्ड की बुक पढ़नी है आप पढ़ लें, because it doesn't matter. They're not going to give some specific details, some specific values. कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने वो values याद करनी है इसकी philosophies की and all those other vectors में, and these values क्या हमने याद करनी है. So I would say no, you don't need to remember these values. और आखिर आप कितनी कर लोगे? लेकिन पंजाब बोर्ड, I remember there were so many tables from in every chapter. There were tables in radioactivity, in nuclear physics. It's like sort of just reminds me of those flashbacks of those nightmares. But anyways, I'd suggest कि physics के लिए आपने MCQ प्रैक्टिस करनी है. बुक रीडिंग को दें टाइम, लेकिन इतना ना दें. देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, एनी अदर बुक्स. बस आपने MCQ प्रैक्टिस करनी है, एंड फिजिक्स की वेटेज भी कम हो गई, सो इंशाल्लाह इट्स गोना बी एन इजी component. English is one of the most confusing thing. Students पूछते हैं because there is no such board book जिससे हम English कर सकते हैं. So for English the point is कि आपने basic rules याद करने from any source you get. You get from pre-med, you do from pre-med. You get from any other, you do the rules. And don't like go into so much details. Now I remember last year I was just studying KIPS practice book for English. और क्या होता था? KIPS prep book, sorry. You start off with a rule of grammar or punctuation, और जैसे जैसे हम डिटेल माइक्रो डिटेल में जाते जाते हैं वो चीज more and more complicated हो सकती है. जैसे आपको भी शायद एक्सपीरियंस हो, मैं कोई भी पेज खोलूं पंक्चुएशन का, you start off with a question mark, they start with a simple application, they go complicated. So I would suggest just keep to the simple. 9 MCQs हैं, उनमें से कुछ ऐसे होने हैं जो sort of they're going to be really easy inshallah for you guys. So for just 3-4 MCQs I won't suggest you give so much input कि आपकी बाकी जो subjects हैं वो hurt हो जाएं उसकी वजह से. So for English, start off with a practice book, know the notes because there is no such board book जिसमें grammar rules है, ना हमने FSC में वो पढ़ा है. And then go for MCQs, maybe 50-50 for both, 50% for reading and 50% for MCQ. And at the last, reasoning section, that's different in NUMS and that's different in PMDC MDCAT. In NUMS MDCAT, we've got a separate segment that's called the psychological segment. Or the best thing is that it's easier than the logical reasoning of PMDC. उसमें open-ended questions होते हैं because we don't get past papers or we don't get the original paper. Students are confused कि आखिर किस तरह questions आते हैं. Let me give you an example. I still remember there was an MCQ in NUMS MDCAT 2024 that said, what if you fail in this exam, what would you do? There was one like I would jump from my building and I would do suicide and all those stuff. तो उस तरह के open-ended questions होते हैं. They're not really testing your skills. They're just trying. आपकी जो होनी चाहिए उसमें target होना चाहिए कि you're going to cover all the topics, like all the questions. You're going to fill the bubbles in the given time. Time कम होता है for the psychological segment. तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बहुत sophisticated अपनी तरफ से philosophy नहीं डालनी, बस जो आपको लगता है ना सही है. For example, there is a question, when I am frustrated, I do this. Don't try to be like superficial, artificial कि no, I won't try कि मैं डांटता हूँ कहीं मेरा negative mark नहीं लग जाए. No, जो आपको सही लगता है आप बस journal से कर लें. और I don't think so there is a weightage for it. Although they don't disclose कि कितनी weightage है उसकी. But if I talk about my last year, मुझे जितने गलत हुए थे, I thought कि शायद मेरा गलत हूँ, but those didn't really matter and I got 98.1% in the end. और I'm sure कि मेरे जो गलत भी हुए होंगे ना, वो bio portion में हुए होंगे. If you see that past paper, that's really difficult. NUMS MDCAT 2024. And then if it comes to the PMDC logical reasoning, that's really sort of you could say a difficult thing in a sense कि उसके हमें सही guidance नहीं मिलती और उसके उन्होंने थोड़ा like 9 MCQs करते हैं. Really sad, really unfortunate for you guys. हमारे वक्त 6 MCQs होते थे, वो भी नहीं होते थे, इस तरह 9 हो गए. But there is no need to worry for that. You've got the best resources at pre-med. You can use those. You can use any other resources. The point is that you need to keep those logical reasoning में MCQ different type के आपने करने.
यानी आपको लॉजिकल रीजनिंग में पता हो कि I think so there are six main components. There's critical reasoning, there's like a statement assumption, there's then patterns. तो हर किसी के ट्राई करें 10-20 MCQs कर ले और that's enough. There's no need to पूरी इतनी मोटी बुक पढ़ने की नहीं जरूरत लॉजिकल रीजनिंग के लिए. बस जितने MCQs आपसे होते हैं कर लें और बाकी at the moment आपको जो सही लगता है आपने वो कर लें. That was a subject-wise strategy. Now let's move to the next thing: types of MCQs in MDCAT. So this is something that's sort of अगर आप experience करें when इंशाल्लाह आप और past papers करेंगे, आप MCQs करेंगे till August or till September, आपको एक चीज महसूस होगी, you'll come to a conclusion that the MCQs they have a specific pattern, and that's exactly what I'm going to tell you today. MCQs are of different types. The first one, अगर आप PMDC के syllabus में जाए, they have also given those categories because they actually work on that. So recall-based MCQ that is mainly related to biology and chemistry. Physics, English, there's no such recall, like mainly. क्या होते हैं उसमें direct textbook line. For example, I'll talk about biology. There's a chapter, biological molecules, chapter 2, and there's a question that what's the water composition of jellyfish. So if you have studied that, you say 99%, and that's a recall based MCQ. There's no logic. कोई आपने इस तरह नहीं करना कि साइंस लगानी है कि जेलीफिश है वो ट्रांसपेरेंट होती है तो उसमें 90% से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ट्रांसपेरेंसी फैक्टर होगा. There's no need to them. For example, there's an organic chemistry like what is the catalyst for oxidation of alkene? So that's something that's written in the book, and you just need to write it. So that's the first thing, recall-based MCQ. The second is conceptual MCQs, and that comes mainly in chemistry and physics. For example, there's a concept, there's some Haber's process, and there's a Leach-Rayleigh principle that says, for example, the pressure is being decreased, so what happens? So now over here, maybe you have remembered it, लेकिन कोई ऐसा वो application दे देंगे वहाँ, for example, वो दे देंगे कि आपने हेबर प्रोसेस पढ़ा, आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा, वो एक थर्ड प्रोसेस ले लें जो आपने नहीं पढ़ा. आप कहेंगे उन्होंने उसकी इक्वेशन लिखी है एंड दे से व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर डिक्रीज. नाउ एट दैट स्पॉट आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि ये एक्सोथर्मिक हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इस तरफ कितने हैं, उस तरफ कितने हैं, इस तरह करना है. आई होप आई एम मेकिंग माय सेल्फ क्लियर. The third one is graph or diagram based MCQs. Diagram based MCQs comes in biology और इतना ज्यादा नहीं आता. Like there's like rare होते हैं ऐसे कोई डायग्राम बना होते हैं, अगर आप पास पेपर देखें जैसे what is A, what is B, and that's sort of similar. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जो बुक है उसके सारे डायग्राम्स को याद करें, उसकी सारी लेवल्स को याद करें. If you got that concept, you will be able to do it. It's just a classification, so I'm just telling it. लेकिन उसके लिए इतना जरूरी है. Application based MCQ that came in last year, if you remember, there was a question from COVID-19 virus, and not one question, I think two questions from in non-scientific, and students were sort of confused कि भाई हमने तो COVID-19 पढ़ा नहीं, हमारी बुक में सिर्फ AIDS लिखा है. if you're from KPK और बलसान, हमारी बुक में चलो ठीक है साथ वो अदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमारी बुक में COVID-19 just came in 2019. How would our books be, or how would we be able to cope up with those questions? लेकिन एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट वही था. There was the same physical characteristic of virus that they are sort of inactivated by pH, they've got a lipid bilayer membrane and all that stuff. Trying to recall it, you guys know better because you're preparing right now. So I've been like 1 year is gone, but then again, so application based इसका होता है कि ये concept पुराना ही होता है, but they give it in a like new tone. जैसे for example आपके hairs हैं, they got disulfide bridges. So कोई question होगा कि for example I need to break those curls on the hair, so क्या हमें तोड़ने हैं, तो disulfide bonds आपने तोड़ने. And the last one is analytical reasoning MCQs. That is like the last portion, logical reasoning mainly. कि उसमें आपने अपना रीजन लगाना होता है. For example, there is a case and they say what is the best approach. You need to just look into what you feel is the best. So that was the types of MCQs and MCAT. Now I'll move on to my last portion, common mistakes to avoid, because after that my brother Qasim will be going on because we've been specified on the NUMS, MDCAT, and some questions of the Army Medical College and all that stuff. So I would like him to answer them. So common mistakes to avoid. I'm just going to tell from my experience, and I want all of you to listen to it carefully. The first common mistake that many of us are doing is reading too many reference books. वो कहते हैं ना कि जो लिंक आता है you just save it in your folder. जहाँ से जिस तरह के notes आते हैं, no matter who is making them, what are the credibility, authenticity of the notes, you're just using them. That's really gonna be problematic. होता क्या है, like we as students, मुझे भी याद है, हमें ना थोड़ी we're like eager. We want to get from every source. We want to keep our prep to the top level. तो उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर देते हैं, या हम ऐसी चीजें कर रहे होते हैं दैट वोंट रियली हेल्प अस. तो रेफरेंस बुक्स हैं, आप अपनी बोर्ड की पढ़ें, साथ फेडरल बोर्ड पढ़ें. इफ यू आर रियली वीक इन कॉन्सेप्ट, यू कैन यूज सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ प्रीमेड और सम अदर सोर्स, वो आप यूज करें, दैट्स एनफ. अगर आपने हर किसी के नोट्स लेने हैं, हर टॉपिक के नोट्स लेते हैं, इवन व्हेन आई एम लाइक गिविंग माय नोट्स इन एन इंस्टाग्राम, यू कैन चेक देम आल्सो. तो मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को लाइक आई वोंट से दैट यू हैव टू यूज दीस नोट्स. नो, आई से इफ यू वांट देम यू कैन यूज देम, इफ यू डोंट आई हैव नो प्रॉब्लम, आई वोंट माइंड इट. The best thing is, yeah, मेरी top priority है कि your things get clear. I'll try to assist you, but if you don't need my resources, don't use them.
because the priority is your like betterment. So reading too many reference book, हर जगह से notes वगैरह करने की, हर group में जो आ रहे हैं, there's no need to do them. Even like अगर आपको लगता है कि आपको किसी formula sheet की भी जरूरत नहीं है, so there's no need. I myself didn't use them. I just kept to the same, एक मैंने book use किया, और अपनी अपनी जो फेडरल बोर्ड मैंने यूज की, पंजाब बोर्ड यूज की, और फॉर इंग्लिश मैंने किप्स की यूज कर ली, एंड दैट्स एनफ. देयर इज नो नीड टू गो इनटू सो मच डिटेल. हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग के लिए इतना नहीं. सेकंड मिस्टेक, नो टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस. दैट आप फॉर एग्जांपल, लेट्स इमेजिन अ पिक्चर, फॉर एग्जांपल इट्स इवनिंग एंड देयर इज लाइक रेनिंग आउटसाइड, जिस आजकल की सीजन है, फ्लड्स एंड ऑल दैट स्टफ, और आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट सॉर्ट ऑफ एंजॉयिंग द म्यूजिक अलोंग एंड यू स्टार्ट एमसीक्यूज कर रहे हो, और आपको कोई पता नहीं 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, एंड यू आर ऑन 1 एफएलपी. इससे एक मसला क्या हो रहा है? दिस नॉट ओनली इनिशियल टाइम वेस्टेज, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और लीथल थिंग दैट हैपेंस एट दैट टाइम इज आपकी हैबिट खराब हो जाती है. You become habitual of doing slow MCQ. At the end, when you need time, you don't get it. When you need the speed, you don't get that speed. So from the start, मैंने जो स्टार्ट करता था, मैं टाइमर स्टार्ट हो जाता था. Even if you're doing 10 MCQs, you need to just calculate कि 180 MCQs I'm going to do in 180 minutes. So 10 MCQs needs 10 minutes. There's no need कि मैं टाइम प्रैक्टिस तभी करूंगा जब मैं पूरा FLP एक साथ करूंगा, एक जगह बैठ के करूंगा तब. No, you're doing 10 MCQs, you're doing 20 MCQs. You need to try to keep it below 3 hours, because 3 hours is that time in the exam with all that stress and confusion. अगर आप अभी से 2.5 hours पे minimally अपना पेपर खत्म करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जाके वहाँ 3 hours से पहले कर लेंगे, because you don't need to take any sort of risk, because this is 1 year and one MDCAT, and it can cost you a whole year. So I don't really want कि ऐसा कोई हो. Third thing is ignoring bubble sheets. The same thing. For example, you're sitting somewhere on a book, or आप ऐसे से MCQ solve कर ही जा रहे हैं, and you don't get like sort of habitual of the bubble sheets. जो physical academy में जा रहे हैं, they don't have such problem, because most of them give bubble sheets around. But those who are doing from online resources, I never discourage online resources. I myself took online step virtual session. But what I did, something different from other online students, मैंने bubble sheets की बहुत ज़्यादा printouts करवा लिए थे. और मैं जब भी कोई MCQ like from 144 MCQ के टेस्ट है, 154 का, 200 का, whatever, I used to keep a bubble sheet, 7 क्वेश्चन देखता था, 7 लिखता रहता था. उससे होता ये है कि आपकी वो एक बहुत अच्छी बन जाती है, इंस्टिंक्ट बन जाती है कि आपने क्वेश्चन 41 का 41 बबल शीट पे कैसे लिखना है. क्योंकि अगर आप ये नहीं करते अच्छे, इट्स गोना रियली कॉस्ट यू. फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे, सोचें आप पेपर में बैठे हुए एंड यू डोंट नो द MCQ 41 एंड यू स्किप इट, और 42 आपने किया और बबल शीट पे 41 जगह पे फिल कर दिया, द होल ऑर्डर इज गोना गो. एंड कैन यू बिलीव हाउ मच लॉस यू कैन हैव, because the whole answer sheet is gonna go. There's no such thing कि आप जाके examiner से कहते please मुझे एक और bubble sheet दे दें. That's like really impossible. The fourth mistake हम जो करते हैं, burnout from overstudy. The same thing. हम क्या करते हैं कि we are like really motivated. हमने कोई reel देखी होती है, white coat ceremony की video देखी होती है, and we are like we are gonna become doctors this year, nothing else. और हम क्या करते हैं? We study like 8 hours, 12 hours, 14 hours, 16 hours, 16 hours per day, and that's really destructive. You look at the research, you look at the studies, this is going to really cost you really mental damage, mental exhaustion. मैं अपने बारे में बता दूं, I've even clarified on Instagram reels, मैंने अपनी stories में publish किया, I've sent my routines to students, and one thing I say, I never study like 4 to 5 hours more than that. और अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं. अगर आपको टॉगल ट्रैकिंग एप्लीकेशन का पता है, like whole record है कि मैंने कितना टाइम किस MCQ कितने दिया था. I don't like एवरेज जो मेरा होता था 4 hours daily. ऑनलाइन एकेडमी से ऑल्सो मेरी, लेकिन फिर भी 4 आवर्स, उसमें से कोई हाफ MCQ और हाफ, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेशन होते थे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था, नो डिस्ट्रैक्शन और काम होता था. एंड द लास्ट थिंग, नॉट ट्रैकिंग मिस्टेक्स. नॉट ट्रैकिंग मिस्टेक्स से क्या होता है? फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग 100 MCQs daily. In 1 month, like in this month of July, you may have done like 3000 MCQs, and that's really good. But what आपने अपनी गलतियां कहीं नोट डाउन नहीं की. Now when September is gonna come, do you think you're gonna remember these MCQs? No, it's like humanly impossible. आपको अपनी गलतियां याद ही नहीं होंगी. तो ये 3000 MCQs का जो आपने बहुत एक अच्छा ट्रिगर कलेक्ट किया था, that's gonna go wasted. इसका solution simple है. 3000 MCQs में से hopefully you're gonna get like 2700 correct है, 300 गलत हैं, चलो ठीक है 500 गलत हैं. 500 को एक जगह नोट डाउन कर. I'm not saying write again it. For example, you're doing on a paper, तो एक जगह बस highlight कर लीजिए जो गलत question है. बेशक question पे एक छोटा start लगा. If you're doing online, that's the best thing. Screenshots ले लें आप. और मैंने खुद screenshot ली है. I have those folders right now also कि मेरे कौन कौन से गलत हुए थे. And I used to remember it या recall it till the end. September तक मैंने वो MCQs अपने देखे जो गलत हुए थे, जो मैंने जनवरी में किए थे या फरवरी में किए थे, मार्च में किए थे. और उससे इतना अच्छा हो गया. फॉर एग्जांपल 10,000 MCQs मेरे पास पड़े हुए थे, क्योंकि जो गलत थे वो मैंने रिवाइज कर लिए थे, जो सही थे उसको करने की जरूरत नहीं थी. So these were about the common mistakes to avoid. And now we're going to move to the second phase of the meeting, in which I'm going to invite my brother Kasim Shafi
He's going to talk in more detail about the Army Medical College, its admission criteria, as well as some journal tips जो आपने use करनी है to boost your academic guidance. So just give me a minute. I'll let him replace me. Assalamualaikum. As Ibrahim has introduced, I'm Kasim Shafi, studying at Army Medical College as Nurse Cadet. So Ibrahim has given a beautiful explanation of different subjects in MD Cadet. So one thing to remember is that when you get the knowledge how to study, where to study from the books, all the stuff. So the crucial point is which differentiate between a MD topper or even in a medical admission is that how to implement it smartly. So I'll give some essential tips that will not only help in MBA preparation, but also other spheres of life. So I'll try to emphasize on the fact that you have to study smartly instead of hardly, or you can say work smart along with working hard. But before that, I'll give you some overview of the admission in Army Medical College. Many students are asking about that. So basically, there are three main categories. The first one, medical cadet. It is the one which is most closely linked to Army. Like it is, for example, you have joined the Army. When you apply for it, there are certain tests, like many tests, initial tests, then physical tests. Also, then there's a like non-certificate also counts, but we don't know what the percentage is from in the overall criteria. And then there is, if we are selected, a detailed interview, detailed medical test, which lasts for about months. When you're selected, you have joined as a army medical seat in for any army medical college or CMS Lahore. There's many campuses also. So in talking about AN College, Army Medical College at Dalwindi, there are 100 medical seats. So when you join it, there's a we have to sign a bond. The bond binds you that you have to serve the army for at least 13 years after 5 years MBBS. So it's made around 18 years, 5 years MBBS, then 13 years serving. In this tenure of MBBS, you get stipend. It is about around 80,000, I think, but it will increase, I think, in the coming months. Moreover, after the MBBS study, you are just directly commissioned at Captain Doctor. So that's the overview of a medical cadet. How is it? The second category is for the students who join as civilian, however, their father or mother is an army officer. So in this, there are other categories also, like the subcategories, ASC, additional secretary cadets, or paying cadet PC, or SFC, self-finance cadet. So अब इसमें ये होता है कि there is some difference in fees. Like if a normal nuns cadet has 11 lakh tuition fees, so there will be some scholarship private deduction. Like you may have to pay 5 lakh, 6 lakh. There depends on the categories. Moreover, अब जो fees है categories हैं PC or SSC, it also depends on the rank of your father or mother in the army. For example, if he's a senior brigadier or if he's a junior like a captain or major, so there's a categories. अब इसमें होता है कि मेडिकल कैडेट एमसी जो मैंने पहले बात की है उसमें तो ये था कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप बाइंड हो गए आर्मी में, आप वहीं रहते हो, उनके हॉस्टल होते हैं, तो वो उसमें पूरा एक आपने आर्मी वाला एक आपको होता है। और लेकिन इसमें ये होता है कि ज्वाइन आप सिविलियन ही करते हो, आप यू आर फ्री टू गो कम टू होम अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो। लेकिन बाद में कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि क्या पता 3 इयर्स इनको सर्व करना पड़े एज अ सिविलियन, लेकिन किसी आर्मी भी आर्मी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। तो इसमें यह है कि बस ओवरव्यू देता हूँ इस कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का। ये बच्चा सिविलियन है, लेकिन फर्क किया है कि उसके पेरेंट्स आर्मी में, तो उसको एक स्पेशल कंपनसेशन होगी है फीस की, और कैटेगरीज डिफरेंट है। तब जो थर्ड कैटेगरी है नॉन कैडेट, वो मेरी कैटेगरी इज प्योरली सिविलियन कैटेगरी। कोई पेरेंट्स का ताल्लुक नहीं आर्मी से और ना स्टूडेंट का है। और जैसे बाकी मेडिकल कॉलेज का होता है मेरिट बेस होता है, और मेरिट भी बाकी कैटेगरी से ज़्यादा होता है। इस साल में खाली 93% क्लोज हुआ है। सो इसमें ये होता है कि फीस नॉर्मल होती है ट्यूशन फीस, और आगे कोई भी आपके बॉन्ड साइन नहीं करना होता, कोई आपके पास कोई ये नहीं है कि आपने लाजमी इनको सर्व करना है, कोई आपकी बाइंडिंग नहीं है।
बस आप पढ़ लो जैसे नॉर्मल मेडिकल कॉलेज होते हैं, आर्मी मेडिकल यूनिवर्सिटी के या खान, और वापस सर्विस से घर आ जाओ, इसमें कोई आपका आर्मी से रिलेशन नहीं होता। तो आफ्टर तो ये मेन सी कैटेगरीज आपको समझ आई होगी। मेडिकल कैटेगरी प्योरली आर्मी वाली है, और फिर जो हमारे पास आती है दूसरी कैटेगरी पीसी, एसएफसी, एससी, वो एक मिक्स है। थोड़ा सा आर्मी इसलिए कि आर्मी बैकग्राउंड होता है बच्चे पेरेंट्स का, और जो होता है स्टूडेंट होता है वो बस सिविलियन होता है। और जो थर्ड कैटेगरी नम्स कैडेट, उसमें बस वो होता है प्योरली सिविलियन होता है। नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक, उसमें जो होता है कि आपके कौन से डिफरेंट टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो एक स्टूडेंट भी बनने के लिए, और बाकी अपने लाइफ को भी करने के लिए। अब जो फर्स्ट टिप है इसमें, ये आपको सुना होगा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, रिमेंबर इट्स क्रूशियल फॉर सक्सेस। अब इसमें डिफरेंट स्पीकर आपने देखे होंगे टेड टॉक्स के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बार बार इसमें स्ट्रेस दे रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आपने जो भी आपका टास्क है, एनी वर्क, अभी हम एमबीए की बात कर लें, एमबीए का एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो स्टडी करना है, अब उसमें आप पहले फर्स्ट क्या है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें क्या आपने स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल आप रखें प्लान 1 मंथ का, रखें आपने ये सब्जेक्ट करने हैं, इतने टॉपिक्स करने हैं, या इतनी बार डिवाइस करने हैं, इतने इंस्टीट्यूट करने हैं, वो पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है आपका टारगेट क्या है। उसके बाद आपने इंप्लीमेंट करना है। उससे इंप्लीमेंट किया है कि आपने वो दूसरा प्लान कर लो, डिफरेंट टाइम टेबल बना लो, तो उससे इंप्लीमेंटेशन करनी है, और उसके बाद आपने रिव्यू करना है कि आपने क्या टास्क था आपका, आपने आप कितने सक्सेसफुल हुए हो, आपने जो जो अचीव किया है, कहाँ आपके ग्रेड या फिर आप नहीं करके अनकम्प्लीट कर सके, उसको फिर आप कोई दोबारा से टाइम टेबल बनाओ और उसको कवर करने की कोशिश करो। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसमें ये है कि अब ज़्यादा स्टूडेंट अकेडमी से आ रहे होंगे, ज़्यादा बात है एमबीए है, तो एक मैं एडवाइस करूंगा आपने अकेडमी का टाइम अपने ज़ाया नहीं करना। ये जितने भी 5 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, या कम हो 2-3 आवर्स 4 आवर्स, कोई डिफरेंट सेशन होते हैं, तो उसमें आपने अकेडमी का टाइम आपने अच्छी तरह स्टडी करना है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आपने गौर से अपने कंसेप्ट में क्लियर कर लेना है। ज़्यादा मतलब कुछ लोग अकेडमी का टाइम ज़ाया कर देते हैं दोस्तों के साथ ये वो, तो आप ज़रा अपना तवज्जो रखें। अब जब आप घर आएंगे अकेडमी के बाद, तो आपने वो जो टॉपिक पढ़ा होता है उसकी आप एमसीक्यूज कर लें। एमसीक्यूज अब क्या है, अब जैसे मैं स्टेप अकेडमी ज्वाइन की थी, उसमें डिफरेंट वो टॉपिक्स के वर्कशीट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक हमने कोई फिजिक्स का फोर्स मोशन हमने पढ़ लिया है एकेडमी में, तो वहां से फिर उसी टॉपिक के आप डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 एमसीक्यूज 40 एमसीक्यूज उस टॉपिक के रिलेटेड। तो अब ये होता है कि आपने एक बार टॉपिक पढ़ा, उसके आपने बस दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो बैठ गई, और साथ में प्रैक्टिस कर लिया, तो एक एमटीकेट वाली लुक आ गई थोड़ा आगे। आगे आपने कैसे अप्लाई करना है अपने नॉलेज इनटू एमसीक्यूज, क्यों आफ्टर ऑल एमसीक्यूज ही होते हैं एमटीकेट में, कौन सा आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन करने, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, अब आपने एक तो बात होगी अकेडमी, आपने से टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। थर्ड काम आपने ये करना है कि आपने जो वीक एरियाज है आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, इसमें ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, आप उसको आराम से रिव्यू कर लें, कोई यूट्यूब वीडियोस देख लें, आपने किसी टीचर से पूछ लें, मजीद बेशक प्रैक्टिस कर लें एमसीक्यूज, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सर रोज रोज के आप ये रूटीन चलती रहे, तो आप एक एक टॉपिक के ना साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होते रहे, आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती जाए, तो एक तरह से एमडी के आप उसके पाथ में हैं। नाउ आफ्टर द टाइम मैनेजमेंट थिंग, the third is the second point is conceptual clarity. अब इसमें यह है कि कॉन्सेप्ट्स का ये बहुत फायदा एमडीकैट में इसलिए होता है, इट्स एमसीक्यू 200 180 एमसीक्यू इस बार में, पहले 200 थे, तो उसमें आप ये नहीं है कि आपने कोई रटा लगा लिया और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि आप फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन ये करो, तो वो आप लिख दोगे, नहीं। डिफरेंट लोग क्या बता आपको कोई केस दे दें, उसमें उसके हिसाब से आपने आंसर करना होता है, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। और आप जो भी आपने टॉपिक से बस पढ़ना है, आपने तवज्जो से पढ़ना है, और बुक्स में आप कोई डिफरेंट यूज कर सकते हो टेक्निक्स, मतलब हाईलाइट कर लो एसेंशियल पॉइंट्स, कुछ स्टिकी नोट्स बना लो ताकि आप रिव्यू कर लो, किसी कंसेप्ट अपने कुछ कंसेप्ट दिमाग में बिठाने, किसी रियल लाइफ से आप रिलेट कर लो, ताकि आपको वो रट्टे वाली चीज ना, वो रट्टा थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता है, जारी बात है, वी कैन डिनाई दैट, लेकिन उसमें आप थोड़ा बहुत आपने दिमाग में बैठा हो ताकि एमसीक्यूज आए ना, तो उसमें आप इजीली कोई कुछ एमसीक्यूज होते हैं आप सीधा देखते हो और बस आप सीधा दिमाग क्लिक करता है, अच्छा इसका यार आंसर है, तो टाइम भी बच जाता है आपका, और अच्छी आपके वो कॉन्फिडेंस रहते हैं, और आपके जो टेस्ट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मुश्किल का। फर्दरमोर, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं टाइम मैनेजमेंट के बाद, और आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में ये आपने ध्यान में रखना है कि एमडीगेट एफएससी जैसा नहीं है, कि एफएससी में के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, वो क्वेश्चन दोबारा आपके कर लेते हो वैसे भी आपके कॉलेज में जहाँ भी,
मगर एमडी कैट के हिसाब है कि यू हैव टू हैव एन एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। जब ये अकेडमी जा रहे हैं, आपको पता हो टेस्ट सीरीज होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू, थाउजेंड ऑफ एमसीक्यू, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग की, आपकी मैंने बात की थी। उसमें यह है कि आपने पहले प्लान, अपनी टाइम टेबल आपने प्लान करना है कितने एमसीक्यूज मैंने करने हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने टॉपिक पढ़ते जाने हैं और फिर अभी एक बार टॉपिक पढ़ा, दूसरी बार रिवाइज किया, तीसरी बार बहुत अच्छी तैयारी होगी। नहीं, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। अब मैंने वर्कशीट की बात की तो रोज आप बेशक हर चीज 20 कर लें, 30 एमसीक्यूज कर लें अभी के लिए। बल्कि जुलाई आ गया तो आप कोशिश करें एक आध एफएलपी ट्राई कर लें 1 वीक में। एसएलपी का ये है कि आपने ये नहीं कि आपने घर बैठ के और मतलब इजी हो कि आपने बस सुकून से और सुस्त माहौल में करना है, बट ट्राई टू जस्ट इमर्ज योरसेल्फ इनटू एग्जाम सिचुएशन। अब आपने टाइम साथ रखें, स्टॉपर्स रखें। अब अगर थ्री आवर्स का एमडी कैट होना है तो आप 2.5 आवर्स का रखें टारगेट। उसमें आप हर सेक्शन का बायोलॉजी कितने क्वेश्चन हैं और फिजिक्स के हैं, उसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप करें। उस हिसाब से आप लोग पहले पहले ट्रेन कर लें तो आपको इंशाल्लाह एग्जाम होने की मुश्किल नहीं होगी। आपको दिमाग में बैठा होगा, आपके हाथ पे चढ़ा होगा वो सारा, आपने उस टाइम में इतने क्वेश्चन करने, तो आपके पास एक साफ आपको एक आइडिया होता है। तो इसमें जैसे मैंने बात की थी बबल शीट में आपने जरूर करना है। अब आपने जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप सादा एफएलपीज हैं, सादा आपने बबल शीट में आपने नोट डाउन करते रहना है आंसर्स। ये नहीं कि आपने बस सर्कल करना है, बल्कि एज अ एग्जाम में आप बैठे होते हैं सर आपने करना है। Now moving on to the fourth and the last thing of my side, mental health. अब you should remember that the peace of mind matters a lot. मतलब MDCAT is a game of nerves. If you absorb the pressure, tackle it wisely, you can race to success. अब जाहिर बात है, इतने डेज हैं, इतने मंथ्स हैं, आप कुछ जनवरी सेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ मई से कर लेते हैं, अब अक्टूबर तक 5 मंथ 6 मंथ, तो बहुत एक एक्सटेंसिव तैयारी करनी होती है, रोज रोज पढ़ना होता है, और ऊपर से प्रेशर भी होता है। एमडी की सारी बात है, फॉर एग्जाम्पल 2 1 लाख और 3 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट सीट्स कोई 2 7 3 7 है। एक प्रेशर भी होता है, नेचुरल है। लेकिन जिसने अब इस प्रेशर में अपने आप को काबू में रखा या फिर ही नोज हाउ टू टैकल, तो वो फिर वो डिफरेंशिएट हो गया और उसमें एडमिशन में पॉजिटिव उसमें होता है, इम्पैक्ट होता है। अब मैं क्या मेंटल हेल्थ के आप क्या कर सकते हैं? सिंपली आपने ट्राई करना है कि कुछ एक्टिविटीज करें दैट फेज रिलैक्स हो जाए, आप थोड़ा आपको रिफ्रेश हो जाए। और जो स्टडी गोल्स हैं आपके, मैंने पहले बताया प्लान करने, स्टडी गोल्स आप अचीव कर लें तो आप थोड़ा खुश हो और बेशक थोड़ी ब्रेक ले लें। आपने 1 वीक का आपने टारगेट रखा कि मैंने इतने टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल 10 टॉपिक्स मैंने करने हैं, और आपने 6 डेज में कर लिया, सैटरडे तक कर लिया, तो संडे को बेशक आप ब्रेक ले लें। यू कैन गो आउट, हैंग विद योर फ्रेंड्स। उसमें आप जहाँ चाहें आप सैर कर लें, या फिर अगर टाइम शॉर्ट है आप वैसे मोबाइल पर दोस्तों के साथ गप्पे मार लें। जो भी आपने करना है, आपने बाहर जाना है, जॉगिंग एक्सरसाइज काफी बॉयज के साथ शौक होता है, तो वो आप करें ताकि आपके ना सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज हो जिसकी वजह से फिजिकल आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। एमडी कैट दे रहे हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एंडोर्फिन्स होते हैं, हार्मोन्स, तो गुड हार्मोन्स होते हैं, उसमें आप रिलीज होते हैं जब आप जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसी तरह मेंटल हेल्थ का ये तो होगी कि जब आपने थोड़ा टाइम आपके पास फ्री हो, रोज रोज आपने एक टाइम की बात की है कि आपने एक गो में नहीं पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसे नहीं करना, ये इट हैज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट। अब आपने ऐसे करना है 15 मिनट्स की ब्रेक कर लें, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में, या पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, 25 मिनट्स आप स्टडी करें, 5 मिनट्स आप ब्रेक लें, इस तरह करके। तो उससे आप थोड़ा बहुत अपने आप में कर लें, एडजस्ट कर लें कि आप बेशक 40 मिनट्स पढ़ लें, 45 मिनट्स पढ़ लें, और फिर आप 5 मिनट्स ब्रेक ले लें, 10 मिनट्स ब्रेक कर लें। तो इस तरह आपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी स्टडीज का भी ख्याल रखना है, और जस्ट रिमेन फोकस। साथ साथ आपने अपने एसेंशियल काम जो है, नमाज हुआ, वो भी जरूर रखना है, और इस तरह इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, द टाइम इज रनिंग, सो आई रिक्वेस्ट Brian to continue and give his part. Okay, so welcome back. I'm just going to talk about some of the common FAQ that मुझे DMs में आते हैं. First of all, PMDC National Question Bank मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि you need to just focus on your own board and federal board. अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास और आपको बहुत अच्छी तैयारी है, so you can go for other boards. But then also the better idea है कि बजाय बुक रीडिंग करने का कोई MCQs करने का, for example KPK बोर्ड कोई MCQs कोई रिसोर्स आपको मिलती है पंजाब बोर्ड की, so that's a good idea rather than doing the book
grading. Next thing, NUMS versus PMBC MDCAT, that's clearly clarified कि NUMS किसके लिए होते हैं, PMBC किसके लिए होते हैं. And one thing about like students really ask, okay, study time after academy. Like honestly speaking, I don't have that experience because I did online academy, but what I've learned from the students and all that stuff, मतलब आपने academy से आके I know there's a lot of exhaustion आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, there's like आप थके होते हैं, just try to focus in the evening, कोई 1-2 hours आप लगा लें, just try to cover that thing जो academy में होते हैं, और फिर बाकी आप time MCQ practice में कर लें. So now let's move on to the question that you are asking in the comment section. So if you have any sort of question, we've just got 3 minutes left. So, and after those 3 minutes, we're gonna have a really good news coming from pre-med. So you need to listen to that also before going. But before that, let me just address some of the questions that you were asking. So the first question about the psychological part of NUMS, as I told before, there's no need to prepare for it. But even if you're like so much into कि मुझे कहीं से MCQ चाहिए इसके लिए, so I've got a reel on my Instagram page जिसमें मैंने एक पूरी PDF prepared की हुई है about the like 200 MCQs of the psychological portion. So you can check that also. That's a free one. So अगर आप में से किसी को चाहिए, you can check for that. Okay, so the next thing, a proper schedule to make you top NUMS MDCAT. I told you NUMS MDCAT is going to be in September. You're going to try कि एक दफा आपका syllabus जुलाई में cover हो जाए, और एक दफा like August वाला it's going to be a bit different इस sense में कि आपका एक दफा syllabus cover हो गया, so you need to focus on MCQs this time. Syllabus दोबारा से revise करना, you need to do that, but keep that to the end. और कोशिश करें कि जो अगस्त के first 2 weeks हैं या first 3 weeks हैं, you have to go for real MCQ practice, real raw MCQ practice. रोज के 300 400 whatever is your limit, आपने कोशिश करनी है इसमें. आपने पूरे नहीं कहते क्वेश्चन बैंक्स को आपने उड़ाना है, खत्म करने हैं क्वेश्चन बैंक्स. Okay, so that is it. Now the next question, is there any book which covers all the provinces in one book for both class 11 and class? मुझे याद है जब मैं like था ना, I was also looking for such resource कि जिसमें सारी बुक्स का मटेरियल एक जगह कमाएगा. Although like there are many such resources, you're gonna get at pre-med website also some shortcuts, notes and all that stuff. But to my knowledge, I won't suggest any such book जिसमें हर एक डिटेल है हर province की, because that's not really needed also. So I'm sorry for that. लेकिन उस तरह की बुक हो भी ना तो like it's gonna be this lengthy और इस तरह करने की I think so नहीं. So after that what we have, the next question we have, yes, about the same thing about the chemistry, physics, numericals and all that stuff. So उसके लिए भी यही है कि फिजिक्स के लिए आपको फार्मूला शीट लेने, केमिस्ट्री के लिए लेने, और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही आपने बहुत ज्यादा करनी है, सो यू कैन बाय प्रीमेड बंडल्स, बिकॉज आई माई सेल्फ पर्सनली यूज देम लास्ट ईयर. सो स्पेशली लाइक जिन स्टूडेंट्स को लाइक फ्रॉम ऑनलाइन है और उनको उस तरह मतलब कि कोई रिसोर्स नहीं मिल रही, यू कैन ऑलवेज गो इनटू देम. दे हैव लाइक गॉट डिफरेंट सेशंस दीस डेज. देयर इज अ नम्स एसेंशियल सेशन, देयर इज सम डिफरेंट, और वो लाइक वो प्रीमेड वाले दे गोना बेटर एलिबरेट एंड आई वुड लाइक देम टू डू इट. बट जस्ट लाइक अ पर्सनल ओपिनियन कि अगर आप में से कोई ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ से अच्छे एमसीक्यूज कर सकता हूँ, तो pre-med is a good source. So yeah, these were the questions. Some of those, if you're still left with some questions, we're running short of time. You can, there's a form link that has been pinned by pre-med PK account on the comment section. You can write your questions over there. We'll try to respond to them. And with that, we come to an end of this webinar. Yeah, don't leave right now. Pre-med is going to take over. So from my side and from my Qasim side, I'm really thankful for all of those who came and who listened. And I'm really hopeful, I'm really like willing, and I'm hoping for one of you gets to the top this year. Thank you and Allah Hafiz. So, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really great. And here we are having a screen of the pre-med page. And let me check. Give me a minute to have a look. That is my screen. Okay. Okay, yeah, so perfect. So when you'll be want to typing on the Google the pre-med dashboard. So you are having the courses.
सो सबसे पहले हम कोर्सेज पर जाते हैं और चेक करते हैं कि कोर्सेज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं दैट इज बिल्ट टू द नम्स एंड द MDCAT. So you will go to the other courses, and then here you will find the NUMS final strike course and the 100 days to go medical school and the Parvaz MDCAT course. So let's have a glimpse to all of these um, to just give you an idea how that it covers. So NUMS final strike courses, and we are providing it with starting with the 1st August till the end of the 15th September 2025. You can have an interfere of it with the easily accessible dashboard, and you're having the all the progress tracking, recordings, and doubt clearing sessions, and advanced test trees, leaderboards, and all of these things. So the modules it covers, it has all the tests, okay, upcoming test, and the all the chapter wise diagnostic tests as well. Then we are having our teachers, okay, Tareen Gardezi and the Vansh Lalwani and the Nurul Maham and the Huri Irfan. So they will be your instructor, okay? So you can have a look of this course. Okay, it costs 7,500 and it will cover, life psychological classes and the 4,000 plus MCQs, half syllabus tests and grand mocks, 40-day nums, test series, live doubt sessions, and 24/7 recording access. Okay, so here moving back, we are having 100 days to go math school. That is the MDCAT course again. And it already has started since 10 June 2025 and will be gonna ending on 25 September. Again, it has live classes, 24/7 recording access, timed mocks. It's a new thing here. Leaderboard and user-friendly dashboard and doubt clearing sessions. Modules, again, bio, chem, physics, English, logical reasoning, course instructors. Okay, and it costs 6,400, and you have all the short listings as well on the cheat sheets, regular assessments, and all these things. Okay, moving back, the one and the most demanded course is the Parvaz MDCAT course. It already has started since 21st of April. So you can have a look at this also. Again, all those things we are covering over here. We might have some different courses instructors as well. And you can see the interference of it. Okay, so besides of these things, so you can go to the dashboard again, and then you can click on this and you have a questions, chapter wise MCQs. That is, so it is one of the most important thing. Okay, I want to highlight it. You have the MDCAT QBank that covers all the, you first have to purchase or to sign in or to, buy a course or a bundle to available these things or to get an access of it. You have biology MCQs, English, chemistry, physics, logical reasoning. Then you have private courses, universities courses that especially was for the AQU, and you can again go for the other universities. And then you have a NUMS QBank, most important. NUMS QBank actually covers the English section, biology, chemistry, and physics, and the psychological test. Okay, so another thing I would like to suggest that yeah, you can have on this question section quiz builder as well, most demanding feature of the pre-med. It is a quiz builder session. You can generate your own quizzes of any subject, of any chapter, or of any test. Guest papers, self-assessment mocks, yearly past papers, and chapter-wise MCQs as I showed you, and the test sessions and the all these things. Okay, flashcards. You are having the flashcard as well, and the what resources. The one of the most important mnemonics, textbooks, videos, chapters wise. Sorry, give me a second.
Okay, so everyone, have a look to this. You are having the pre-med bundles, MDCAT plus nums, and that is basic, advanced, ultimate. And we have courses, that nums final strike courses, and the 100 days to go med school course, and the Parvaz MDCAT course. Okay, you can have a look at all these, descriptions and the course extensions. Again, we are having Parvaz MDCAT course and the NUMS Final Strike course and the 100 Days to Go Med School course. You're going to have an access to all of these, like 65 plus live lectures, 4,000 plus MCQs, and Parvaz is offering shortlisting and cheat sheets. We are having all these things written on this section. Then if like I have to solve MDCAT mocks before a week of my MDCAT exam, so I would go for this bundle, MDCAT mocks, that cost 2,975, and I'll be going to purchase that. Okay, then you are having nums bundles, and the courses again we are having over here highlighted, and then we are having all-in-one course or the all-in-one bundles, basic, advanced, and the ultimate. And again, you can go for the separate bundles, chapter-wise MCQs, past papers, mocks, sessions, quiz builders, discussions, cheat sheets, mnemonics, chapter-wise flashcards, and short listings. Yeah, these all the things. Again, private universities, as it was for the AQU as well. And you can also go for the Xiaotin. So we are offering actually all the stuff related to that. Courses, again, you can, as I told you, you are having an interference of this course system. That was it from my side. And if you have any questions, you can ask on the description. And you can also submit a form that for the link that we have published on the description as well. And after that, inshallah, we'll be gonna contacting you about the, questions you are having. And if you are interested, so you can fill that form also. It will be in the description again to submit that form. Okay, so that was it from my side.